हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानना है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। सो हम सबको पता है फिजिकल क्वांटिटीज दैट एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। हम लिख सकते हैं इसे एनी measurable क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस चैप्टर में हमें बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज पे फोकस करना है। नाउ इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? Scalar quantities have only magnitude। जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एंड ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट ऑल्सो हैव डायरेक्शन। उसे एक पाथ भी है उसके पास। जो भी क्वांटिटी है उसके पास एक पाथ एज वेल एज एक मैग्नीट्यूड। अगर दोनों है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं दैट टू बी कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, to be called a vector quantity, a quantity should have magnitude। अगर मैग्नीट्यूड होगा तो ही वो वेक्टर कहला सकता है। साथ में इट शुड हैव डायरेक्शन। अगर ये दोनों होगा तभी वो वेक्टर कहला सकता है वो क्वांटिटी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड obey the laws of vector addition। This is the most important point, that to be called a vector quantity, a quantity should obey the laws of vector addition। Now there's a question that why is current a scalar quantity? हमने अभी देखा कि if any quantity has magnitude as well as direction, that is called a vector quantity। अब current के पास अपना magnitude भी है and current के पास एक path भी है, that is direction। So why is current a scalar quantity? So, why is current a scalar quantity? Because it does not obey laws of vector addition। करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। The first two conditions are satisfied, but the last and the most important condition, that is it should obey the laws of vector addition, current does not obey that। करंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज वेक्टर एडिशन? सो लेट्स डिस्कस। So
vector addition. So वेक्टर एडिशन के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ and the other one is parallelogram law. Now under this triangle law we have one more law that is known as the polygon law. Now how are vectors added by these laws? Let's suppose we have two vectors. Let's say a vector and we have a b vector. So now what do we do is we use a concept that is tip to tail. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम टिप टू टेल रूल यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस टिप टू टेल रूल? जो हमारा पहला वेक्टर है, लेट्स से दी ए वेक्टर, उसके टिप से जो हमारा दूसरा वेक्टर है, लेट्स से द बी वेक्टर, उसके टेल को हमें ज्वाइन करना है. ये ए वेक्टर का टिप है और ये बी वेक्टर का टेल है. सो नाउ दिस इज ज्वाइंड विथ ईच अदर. नाउ हमें एक रिजल्टेंट बनाना है जो ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के टिप से ज्वाइन करे. And this is our resultant vector. Now, polygon law. Now, let's say we have three vectors. Let's say a vector, we have a b vector, and a c vector. Now, we have to add these three vectors. So, in this triangle law, adding three vectors together is not possible. So, that's where polygon law comes in, to add more than three vectors. So what do we do is a vector ka tip, connect it with the tail of b vector. The same rule, tip to tail method and polygon law also. a vector के टिप से b vector के टेल को ज्वाइन करना है और b vector के टिप से c vector के टेल को ज्वाइन करना है. a vector के टिप से b vector के टेल को, बी वेक्टर के टिप से सी वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है और फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि ए वेक्टर के टेल को सी वेक्टर के टिप से ज्वाइन कर दे. सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. And over here we'll add all the three vectors, that is a vector plus b vector plus c vector. Now parallelogram law. Again let's say we have two vectors. Let's suppose a vector and b vector. Now in parallelogram law we use the rule of tail to tail. Remember here we use tip to tail and here we'll use tail to tail. So let's connect these vectors by tail to tail rule. So a vector ka tail and we join the tail of b vector. You can see this is the tail of a vector and this is the tail of b vector. So we have joined both of them using their tails. So now for parallelogram law we have to extend a parallel line from both the vectors. A parallel line from a vector as well as from b vector. Now we join the tip of b vector with the tip of a vector using a diagonal. Now this diagonal is the resultant vector and it has the value a vector
plus b vector. So now there are few points to remember. First, any vector can be rotated parallelly, keeping its magnitude and direction same. Any vector can be rotated parallelly, keeping its magnitude and direction same. अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर, अगर इसे हम पैरेलली रोटेट करेंगे बट कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, द वेक्टर विल बी द सेम. कोई चेंजेस नहीं आएगा इस वेक्टर में अगर हम इसे पैरेलली रोटेट करें बट अगर हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखें. नेक्स्ट, this is a very important point, that if any vector can be second one, if any vector is rotated through an angle theta except integral multiple of 2 pi comma the direction is changed and hence the vector is changed. Now what does this mean? If any vector is rotated through an angle theta except integral multiple of 2 pi, the direction is changed and hence the vector is changed. अब इसका क्या मतलब है? Let's say we have a vector a vector and let's say we have it on a plane. So अब अगर इस थीटा को हम अगर इस वेक्टर को हम किसी भी एंगल से रोटेट करेंगे, लेट्स से द एंगल इज थीटा एंड दिस इज द न्यू वेक्टर, लेट्स से ए डैश. सो अगर हम इस ए वेक्टर को किसी भी एंगल से रोटेट करेंगे, सो द वेक्टर इज चेंज्ड बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंज्ड. हम देख सकते हैं ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है बट ये जो ए डैश वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है. सो अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये वेक्टर चेंज हो, सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंड वी नो द वैल्यू ऑफ 2 पाई दैट इज 360 डिग्री. अगर हम किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करेंगे, दैट मीन्स अगर हम वापस इस वेक्टर को यहाँ पे ले आएंगे रोटेट करके, दैट इज द ओनली केस व्हेन द वेक्टर विल नॉट बी चेंज्ड. और एल्स अगर हम किसी भी एंगल से इसे रोटेट करते हैं, द वेक्टर विल बी चेंज्ड बिकॉज द डायरेक्शन विल बी चेंज्ड. Now
let's take angle between two vectors. किसी भी दो वेक्टर्स के बीच हम एंगल कैसे निकालते हैं? हमारा जो पहला रूल था टिप टू टेल, लेट्स सी इस रूल के थ्रू हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं. अगेन लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, a vector and b vector. Now we'll join this using tip to tail, that is a vector का tip and b vector का tail and then a resultant vector. Okay, now अगर इस a वेक्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, so we can see an angle theta is formed here and one theta is also formed here. This theta is the exterior angle and this theta is the interior angle. हम देख सकते हैं कि a और b के बीच के एंगल है जिसे हम थीटा मान रहे हैं. So ये हमारा टिप टू टेल रूल था, और साथ में साइमल्टेनियसली अगर हम टेल टू टेल को लें, ए वेक्टर के टेल से अगर हम बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन करें, दिस टाइम देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ पैरेललोग्राम, बट अगर इस ए वेक्टर को हम अगर इस ए वेक्टर को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, सो वी कैन सी वन एंगल थीटा इज फॉर्म्ड हियर एंड वन एंगल थीटा इज फॉर्म्ड हियर. ये जो थीटा है वो इस पूरे एंगल को कवर करेगा, एंड दिस थीटा, दिस इज द स्मॉलर एंगल. सो वी कैन सी दिस इज द एक्सटीरियर थीटा and this is the interior theta. In both the cases we take the smaller angle, so this is the angle. ये जो outer theta है that is the required angle. The difference is that tip to tail rule में हमें exterior theta को लेना होता है and tail to tail rule में हमें interior theta को लेना होता है. So that's all for today. Hope you like the video. और नेक्स्ट वीडियो में हम रिजल्टेंट वेक्टर के डेरिवेशन पे बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और इंक्लाइंड प्लेन यूनिट वेक्टर्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.